जय जगन्नाथ पिला माने आज मु इलेक्ट्रिक फील्ड रो आ गोटे वीडियो नहीं के आसी मु भाबुची तुम माने बहुत भलरे थिबो आ मो वीडियो देखिकी तुम प्रिपरेशन करथिबो बोर्ड आ जेई नीट पाई की तो आमे प्रीवियस क्लास रे आमे इलेक्ट्रिक फील्ड कोन पढितिले आ इलेक्ट्रिक फील्ड आमे एक्सियल लाइन रे बाहर करथिले तो आज आमे आउ दुईटा डेरिवेशन करबा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन and electric field on any general point तापर नेक्स्ट क्लास रे पुणी से इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू करिवो तो आज जो दुटा डेरिवेशन हबो त भल से तमे बुझिबा चेष्टा करो जदि प्रीवियस वीडियो देखिन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन तमे YouTube को जाई की पीएन फिजिक्स प्रदीप नंद सर्च करी की तमे देखि परिबो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन रो डेरिवेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड कोन इलेक्ट्रिक फील्ड केमिति होउची इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला कोन इलेक्ट्रिक फील्ड रो यूनिट्स डायमेंशन कोन इलेक्ट्रिक फील्ड रो यूनिट कोन सब मु से वीडियो रे कहिची तो तमे सेरा देखि परिबो तो आज रो वीडियो पूरा मूलरु शेष पर्यंत देखिबो एवं तमरा क्लियर हेइ जिवो इलेक्ट्रिक फील्ड रो डेरिवेशन रिगार्डिंग तमरा इक्वेटोरियल लाइन आउ कोडी आउ ऑन एनी जनरल पॉइंट सो ए दिटा हमें डेरिवेशन करिवो टिके प्रीवियस क्लास कहि दउची हमें प्रीवियस क्लास रे कोन डेरिवेशन करथिले तो तमे जानिचो इलेक्ट्रिक फील्ड कोन तो प्रीवियस क्लास रे मु इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेशन करथिली ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल सो दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट भी मु कहिची तमु कोन सो व्हेन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस समान और ऑपोजिट चार्जेस separated by a distance then it is known as a dipole तो आमे प्रीवियस क्लास रे कोन बार करथिले ऑन द एक्सियल लाइन एठो r डिस्टेंस रे एक्सियल लाइन रे एट पॉइंट m दर ए पॉइंट m रे आमे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करथिले तो से इलेक्ट्रिक फील्ड केते आइतिला ना e एक्सियल इज इक्वल टू आइतिला k 2p by r cube k 2p by r cube बा केते आइतिला k रो वैल्यू जदि 1/4 pi epsilon naught ने भी 1/4 pi epsilon naught 2p divided by r cube होइतिला इलेक्ट्रिक फील्ड आर डायरेक्शन को आइतिला डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रो जुआरे डायरेक्शन माइनस चार्ज रु प्लस चार्ज आर भी सिआरे डायरेक्शन आइतिला इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम -q टू +q मु भाबुची तमे एटा बुझी पारिछ डायरेक्शन हेतला कोले -q टू +q जदि बुझी न पारिछ आउतरे जाई की वीडियो टी देखो तमे बुझी पारिबो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल ठीक अछि सो ई एक्सियल हेतला k * 2p / r³ बा 1/4 pi epsilon naught 2p / r³ एबे मु करिबी सो लेखिबा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल on the equatorial line so खाता पेन धरी की बसी पड़ो आउ टाइम वेस्ट करिवानी so electric field due to an electric dipole on the equatorial line सब हेडिंग कला on the equatorial line electric field due to an electric dipole on the equatorial line ठीक अछि पिला माने इक्वेटोरियल लाइन कोन फर्स्ट देखो तमे मु कहूची देखो एटा हला मोर मैं तळे करू एटा हला मोर इलेक्ट्रिक डाइपोल -q and this is +q ओके सो एडा हला तार सेंटर मु कहितली r लेंथ भी l r लेंथ भी l जदि मु ए लाइन रो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने भी परपेंडिकुलर टू द डाइपोल and it bisects the dipole and that is called equatorial line कौन ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर is called equatorial line तो मु ए जे कोनोसी पॉइंट रे ए लाइन रो जे कोनोसी पॉइंट रे मु कोन बाहर करिवि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिवि तो फर्स्ट देखो केमिति हमें करिवा प्रोसीड करिवा
ओके सो माने कर ए डिस्टेंस आर आ नाम दे दउची एटा धर ए एटा बी एटा सी ओके सो एटा पॉइंट एम बुझिएला सो this CM is the equatorial line ए CM रो एनी पॉइंट रे मु इलेक्ट्रिक कोन बार करिवि फील्ड बार करिवि बुझिएला सो ताहाले मु लेखुची देखो बोल से तो वी हैव टू कैलकुलेट जहां मु कहूची तमे सेया लिखिबो बुकेस लैंग्वेज लिखिबा बुक रो लैंग्वेज लिखिबा किछि दरकार नाही तेनु करी देखो मु कोन कहूची वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन we have to calculate electric field on the equatorial line. So equatorial line means, so bracket I am writing perpendicular bisector. परपेंडिकुलर जे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करूची परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सो से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऊपर मु बाहर करिवि इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक अछि अच्छा सो लेखा let M be a point on the equatorial line at a distance r from the dipole let M be a point on the equatorial line at a distance r equatorial line at a distance r from the dipole बुझिएला पिला माने ना कार डाउट अछि तो मु एई पॉइंट रे मु बाहर करिवि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एटा मु जानि छि L एटा जानि छि R ताले एटा केते हे जीवो एटा केते तो एटा हे जीवो एटा 90 डिग्री एटा L एटा R तो एटा हाइपोटेन्यूज केते हे जीवो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रा रूट ओवर एटा केते हे जीवो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रा रूट ओवर बुझिएला ताले मु एई पॉइंट रे बाहर करिवि कोन इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा एई पॉइंट रे कहा कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हबो आज को गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड हबो आज को भी गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड हबो तो मते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करियार अछि तो केमिति करिवे बे देखो एट एम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q देखो एट एम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q एट एम electric field due to minus q charge e minus q केते ही जीवो सो e minus q एडी केते ही जीवो e minus q due to minus q charge k q by r square केते ही जीवो ना l square plus r square तार रूट ओवर हटी जीवो कोन हे जीवो l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बुझिएला पिला माने अच्छा ए जो e माइनस q हैला r डायरेक्शन मते देखेबार अछि केमिति डायरेक्शन देखेबी देखो एठी जो जदी मोरे टेस्ट चार्ज जानिली ये टेस्ट चार्ज को टाणीबो ना ठेलीबो ये माइनस q अछि टेस्ट चार्ज ता सब बेले पॉजिटिव तो ये माइनस q आ जोगु मोर फील्ड होउची ताले ये ताकू टाणीबो प्लस q को टाणीबो निज आडकू अट्रैक्ट करिवो निज आडकू सो e minus q रो डायरेक्शन या रही जीवो e minus q so the direction will be from m to a so the direction will be from m to a सो एपटे डायरेक्शन हे जीव तार बुझी पाउछ पिला माने ना कहार डाउट अछि अच्छा एबे जदि एपटे डायरेक्शन हे जीव ताहाले एबे मु देख कोन करूची ड्यू टू प्लस q सिमिलरली at m electric field
at M, electric field due to plus Q, due to plus Q charge, electric field due to plus Q charge, E plus Q is equal to केते ହେଇଯିବ? E plus Q is equal to again KQ by L square plus R square. But what will be the direction? KQ by L square plus R square. The direction will be, you see, so the direction will be in this direction. It will be in this direction. So let's give some name there. A, B, C, M, N. So that it will be from M to N. Okay. So the direction will be from M to N. So the direction will be from M to N. M to N. बुझीला पिला माने ना कहार डाउट्स अछि तो जदी बुझीला एबे देखो एबे मु कोन करूची गोटे एटा हला E माइनस E प्लस Q. सो गोटे हला E प्लस Q आ गोटे हला कोन E माइनस Q. सो गोटे रे डायरेक्शन हला इयाडे आ गोटे रे डायरेक्शन हला इयाडे ताहाले मु एबे कोन करिवि मु केमिति नेट बाहर करिवि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M. तो एति के हमें जानि गला पिला माने एबे देखो तो मु एबे कोन लिखुची एठी एति के लिखि देला जदी पॉज करी एति के लिख तापर मु एटा लिखौची तापर मु लिखिबी ऊपरटा मु टिके लिखै दउची पिला माने जोटा थ्योरी टिके लिखिची सो एटा लिखै दउची अच्छा पॉज करी लिखि दियो एति को सो एति के तमे जानि गलो ठीक अछि सब क्लियर हबा कांसेप्ट पिला माने किछि व्यस्त हबार नाही सो मु कहली एटा हला एपट डायरेक्शन रे एटा हला एपट डायरेक्शन ताले नेट मु केमती बाहर करिवि किंतु दीटा जाकर मैग्नीट्यूड समान ताले मु कोन लिखि दउची देखो तो एई ता देखो गोटे लाइन मु पैरेलल टू दिस लाइन टाणुची सो एई लाइन ता गोटे लाइन पैरेलल टू डॉटेड लाइन ता देखो पैरेलल टू AB आ नाम दे दउची MN गला QR Q and R राइट एबे तमे बुझिया चेष्टा कर जदी मु एई एंगल ता मु थीटा नउची एई एंगल ता जदी मु थीटा नेबी ताहाले एई एंगल ता भी मोर थीटा हबो ताले एई एंगल ता भी मोर थीटा हबो बुझी होची पिला माने एबे एटा E माइनस Q एटा E प्लस Q ठीक अछि एटा E माइनस Q एटा E प्लस Q दीटा तकर मैग्नीट्यूड समान देखो पिला माने मु कोन लिखुची E माइनस Q द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E प्लस Q द मैग्नीट्यूड लेट्स से E मैग्नीट्यूड E माइनस Q द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E प्लस Q द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E ताहाले एटा जदी थीटा हला मु एई E माइनस Q को एपट साइड को रिजॉल्व करि परिबी जदी एपट साइड को रिजॉल्व करिबी E माइनस Q cos थीटा आइ जिवो तमन जानि थिबो गोटे वेक्टर सो जदी गोटे वेक्टर अछि एटा थीटा अछि एटा A अछि तले थीटा साइड ता कोन आइ जिवो A cos थीटा एपट साइड ता कोन आइ जिवो A sin थीटा सो E माइनस Q रो मैग्नीट्यूड E माइनस Q रो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू केते पिला माने E सो E एपट आइ जिवो कोन आ जोगु माइनस Q जोगु ओके सो माइनस Q जोगु एपट आइ जिवो देखो कोन पिला माने मु सॉलिड लाइन टाणी दउची एपट आइ जिवो E cos थीटा ओके एपट आइ जिवो E cos थीटा ठीक अछि E रा एपट आइ जिवो E cos थीटा अच्छा E रा परपेंडिकुलर एपट आइ जिवो E sin थीटा E sin थीटा बुझियला पिला माने पुणी एटा आर मैग्नीट्यूड भी मोर कोन E सो एई जो वेक्टर अछि ताले एटा जदी थीटा मोर एटा भी थीटा हबो एटा भी थीटा हबो अच्छा एटा जदी थीटा एटा भी थीटा हबो ताहाले मु कोन करिवि तो एटा रा एपट साइड भी कोन हे जिवो पुणी E cos थीटा पुणी ऊपर साइड हे जिवो कोन E sin थीटा E sin थीटा तो ए E sin थीटा इक्वल एंड ऑपोजिट
सो से माने कैंसिल हे जिवे ताले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुआडे रहिला आ जोगु भी एपटे ई cos थीटा आ जोगु भी एपटे ई cos थीटा सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2e cos थीटा सो मु देख लिखुची तमे बुझी पारिबो भल से सो e can be resolved लेखो MAB if MAB angle is equal to theta if MAB is equal to theta then Q okay QMA angle is equal to theta so E minus Q can be resolved as E cos theta and perpendicular component as E sin theta. So theta का एकड़ी लिखी दवा ताले so that मते सुविधा हो. So E minus Q and E plus Q can be resolved into two components. E minus Q and E plus Q can be resolved into two components. One perpendicular component will equal and opposite. The perpendicular component will be equal and opposite. Okay, so the perpendicular component is equal and opposite. ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି E plus E minus Q is equal to E plus Q is equal to E is equal to केते ना K Q by L square plus R square. Okay, so components. The perpendicular component will cancel each other. The perpendicular component E sin theta is equal and opposite. So they will cancel each other. Equal and opposite. So they will cancel each other. So net electric field on the equatorial line. Net electric field on the equatorial line. Net electric field on the equatorial line. E equatorial is equal to E cos theta plus E cos theta. That is equal to 2E cos theta. कहीं की 2E cos theta? आज को भी एपटे E cos theta, आज को भी एपटे E cos theta. 2E cos theta. Net electric field on the equatorial line is 2E cos theta. बुझिएला पिला माने? ओके, सो मैं बेटा लिखि दउची, लिबे दउची. 2E cos theta. जदि 2E cos theta हैला ताले किनु थीटा मते जानि नि मु खाली आर एल जानि छी तो cos थीटा को मु एबे कोन करू छी देखा 2e e जानि गली केते k/l² + r² एबे cos थीटा को मु कोन लिखि परिबी एई ट्रायंगल देखो cos थीटा इज इक्वल टू केते हे जीवो cos थीटा हे जीवो k/k एडाला p एडाला b एडाला h केते हे जीवो l/l² + r² √ in the triangle AMC, in the triangle AMC, right angle triangle AMC, cos theta is equal to L divided by √of L² plus R². So cos theta is equal to L divided by L² plus R². So E equatorial केते? So E equatorial is equal to केते हवा पिला माने
2e cos theta, 2 into e is how much? K q divided by L square r square plus L square, r square plus L square or L square plus r square into L divided by r square plus L square root over এটা দেখা হচ্ছে পিলা মানে so E equatorial is equal to 2kq by r square plus L square, r square plus L square root over. ଆଉ ଟିକେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବା ତାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବା କ'ଣ ସो ଏତିକି ତମେ ଜାଣିଗଲ ଏଟା থিওরি ଜିନିଷ ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି ସो ଏବେ ଦେଖିବା ସो ଏବେ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲା ମାନେ ଦେଖ ସो ଏବେ କେତେ ହେଇଯିବ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ଲାଇନ ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ E equatorial is equal to k q into 2l लिखि परिबी q into 2l टा वेट लिखि देबी k q into 2l divided by r square plus l square into r square plus l square root over केते ही जीवो r square plus l square to the power 3/2. So that is equal to E equatorial is equal to again E equatorial is equal to how much? K into P. Q into 2L is your dipole moment P पिला माने. So इटा रहिला R square plus L square to the power 3/2. So इटा हला E equatorial line KP by R square plus L square P, where P is the dipole moment. P कोना dipole moment P value P कोना ना Q into 2L. So Q into 2L को मु कोन लेखि छी डाइपोल मोमेंट P लेखिले पिला माने so Kp by R square plus L square to the power 3/2 एडा बुझी पाइलो पिला माने मु आउथर कहूची देखो E minus Q रो डायरेक्शन हला इयाडे मु एडी भी डायरेक्ट करि परिबी देखो आउथरे E minus Q एडा ला E minus Q by E ओके तर E minus Q रो मैग्नीट्यूड हला E minus Q रो मैग्नीट्यूड केते हला E हला तापरे देखो एटा हला मोर पैरेलल लाइन ठीक अछि ता माने एटा हे गला मोर थीटा बुझी पारुचो ता माने एटा कोन हे जीवो E cos थीटा तापरे एपटा हे जीवो केते E sin थीटा बुझी पाइलो सेमिति आ जोगु सो आ जोगु केते हे जीवो E plus Q जोगु E plus Q कुआडे E plus Q याडे तामाने E plus Q is equal magnitude is equal to मुने E ठीक अछि पिला माने ताहाले ये भी थीटा आइ जीवो ये जदी थीटा आइ जीवो आर एपट साइड कंपोनेंट केते आइ जीवो अगेन E cos थीटा आइ जीवो मु ब्लू पेन ले लिखि दउची आर एपट साइड कंपोनेंट केते आइ जीवो सेही E cos थीटा आइ जीवो सेही E cos थीटा आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट के एते आइ जीवो E sin थीटा. So ताले A E sin theta, A E sin theta equal and opposite. So they will cancel each other. ताहले A E cos theta, blue E cos theta आ जोगु, black E cos theta आ जोगु. ताले नेट केते ही जीवा 2E cos theta, 2E cos theta net electric field. E रा वैल्यू केते ना E रा वैल्यू हैला KQ by R square plus L square. बुझी पाइला पिला माने ताले cos theta रा वैल्यू केते L by L square plus R square. सो जदि मु पकई देली एठी ताले एते कि मु आंसर पाई गली वेरी इजी एबे देखो एबे आउट के आपको सिंपलीफाई मु करबी सो ई इक्वेटोरियल हला kp by r square plus l square to the power 3/2 एबे जदि मु l रो वैल्यू वेरी स्मॉल लेबे इन कंपैरिजन टू r if L is very small, L is very small, okay, then L square is out very small, L जदि बहुत small, L square भी आउरी छोटा ताले so we can neglect L square, so we can neglect L. If I will neglect L, then E equatorial केते ही जीवो E equatorial केते ही जीवो पिला माने Kp r square to the power 3/2 Kp by r cube
because neglecting this L square value 0 हो जिवो r square to the power 3 by 2 square 2 कटि जिवो केते हो जिवो kp by r cube very important kp by r cube अच्छा आर डायरेक्शन क्वाड हबो पिला माने प्रीवियस जो एक्सियल लाइन हेतिला तार डायरेक्शन मु कहितली -q to +q बट आर डायरेक्शन क्वाड हला +q to -q ऑपोजिट to the direction of the dipole movement so lekha so direction will be from +q charge to -q charge from +q charge to -q charge that is opposite to the direction of dipole movement opposite to the direction of the dipole movement बुझिएला ए पर डायरेक्शन है नेट इक्वेटोरियल लाइन रो +q to -q so opposite to the direction of the dipole movement बुझिएला पिला माने अच्छा एडा हला इक्वेटोरियल ताले एक्सियल मु कोन बाहर करथिली तो मु एक्सियल बाहर करथिली कोन बाहर करथिली एक्सियल इज इक्वल टू k into 2p by r cube k into 2p by r cube किंतु इक्वेटोरियल बाहर कली कोन kp by r cube ताले बड़ कोडा बड़ होची एक्सियल so e axial is greater than e equatorial बुझी पाइला पिला माने केते greater so this is the approximate okay we have neglected L value so this is the approximate e axial is greater than e equatorial काहे कि ना मु इक्वेटोरियल में kp by r क्यूब बाहर कली एक्सियल ले बाहर करथिले k into 2p by r क्यूब ठीक अछि मु k रे वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p by r क्यूब लिखि परिबी किछि असुविधा नाही तो एति कि हला मोर इक्वेटोरियल लाइन रो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन तो बुझी पाइल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एई पडर हला m2q काहे कि ना r cos थीटा एपोटे sin थीटा एपोटे r cos थीटा एपोटे sin थीटा एपोटे तो ए दीटा इक्वल ऑपोजिट ए कैंसिल हे गला आ जोगु भी e cos थीटा आ जोगु भी e cos थीटा सो मिसे के केते हे गला 2e cos थीटा रो वैल्यू पकई देला e रो वैल्यू पकई देला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मोर बाहरी गला वेरी इजी एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड पाई की पिला माने पॉज करी लिखि दिया इरेज कर दउची पिला माने एबे हमें बाहर करिबा हम इक्वेटोरियल लाइन कोन जानिलो पिला माने एक्सियल लाइन कोन जानिलो एक्सियल लाइन हला ऑन द सेम लाइन ऑफ द डाइपोल इक्वेटोरियल लाइन हला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एबे कोन करिबा हमें एबे हमें बाहर करिबा एनी जनरल पॉइंट हमें दीटा पर्टिकुलर पॉइंट रे बाहर कले जे कोनोसी पॉइंट देथिवा मु केमिति इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिवि ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ओके सो लेखा इलेक्ट्रिक डाइपोल sorry electric field due to an electric dipole on any general point electric field due to an electric dipole on any general point बुझी पाइला पिला माने तो जे कोनो से जनरल पॉइंट मु नेबी सेडी इलेक्ट्रिक डाइपोल बाहर करिवि सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करिवि ठीक अछि तो एबे देखो एटा वेरी इजी मु नेली एटा -q एटा नेली +q एटा ला सेंटर एडाला L एडाला L ठीक अछि पिला माने तो एठी गोटे कोन अछि डाइपोल मूवमेंट अछि P मने कर जे कोनोसी जागा रे गोटे पॉइंट M नेली मु एठी बाहर करिवि
at an angle theta with a dipole moment, at an angle theta with a dipole moment in each point गोटे m नेली मते सेठी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करियार अछि मु केमिति बाहर करिवि पिला माने देखो वेरी इजी तो फास्ट बुझ तापर लिखिबा ए जो p रहिला ए p रहिला मते ए m पॉइंट रे दरकार एटा हला एट ए डिस्टेंस r मोर ठीक अछि एट ए डिस्टेंस r ताले ए p टा ए पटे रहिला जदि p टा को मु एपटो रिजॉल्व करिवि से कोन हे जिवो p cos थीटा p टा जदि एपटो रिजॉल्व करिवि कोन हे जिवो p cos थीटा डिस्टेंस हला केते डिस्टेंस हला मोर r एटा हे जिवो p cos थीटा अच्छा ए p टा जदि परपेंडिकुलर रिजॉल्व करिवि कोन हे जिवो p sin थीटा सो एटा वेक्टर p थीटा टा एपटे एपटा p cos थीटा तार परपेंडिकुलर टा p sin थीटा सब बेले माने रख जदि गोटे वेक्टर p अछि सो एटा हला cos थीटा वेक्टर टा सब बेले मझिरे रहइबो एपटे रहइबो कि p सब बेले भूल करिवो पिला माने p cos थीटा एंड p sin थीटा सो वेक्टर टा सब बेले मझिरे रहिला cos थीटा कंपोनेंट एपटे तार 90 डिग्री टा हला sin थीटा कंपोनेंट देखो cos थीटा कंपोनेंट एटा ता 90 डिग्री टा हला sin थीटा कंपोनेंट बुझिएला एटा हे जिवो p sin थीटा एबे जदि देखो बढ़िया जिंस मु कहूची एबे ए जो p रो एक्सियल लाइन कोडा थिला p थिला डाइपोल मोमेंट तार एक्सियल लाइन एटा थिला एबे p टा हे गला p cos थीटा तार एक्सियल लाइन कोडा हे गला एटा हे गला एबे जदि डाइपोल मोमेंट p sin थीटा हे जिवो तार इक्वेटोरियल लाइन एटा हे गला बुझी परछो पिला माने ता माने इट इज वेरी इजी देखो मु कोन कहूची एटा थिला मोर डाइपोल आर एक्सियल लाइन एटी थिला मु एटी एम बार करथिली तार इक्वेटोरियल लाइन कोडी थिला एटी कहा पाई की p पाई की एबे देखो मु एटा जदि p बदल रे p cos थीटा नै जीवी तो मते एक्सियल लाइन रे बाहर करियर अछि कहार p cos थीटा रो बुझी पाछो पिला माने पुणी p sin थीटा रो एटा कोन इक्वेटोरियल लाइन मते बाहर करियर अछि तो सेति पई मु कोन करिवि देखो भल से let us consider a point m let us consider a point m at a distance r making an angle theta with the dipole making an angle theta with the dipole okay so now point m is on the axial line of p cos theta. Point M is on the axial line of p cos theta. So what I can do is at M okay, so electric field due to this line will be how much? I am taking E1 let's say on the axial line E1 is equal to how much? मु कोन बाहर करथिली एक्सियल लाइन रो ई एक्सियल रो मु बाहर करथिली ई एक्सियल रो ओके सो k into 2p by r क्यू बाहर करथिली k into 2p by r क्यू बट एठी कोन अछि p बदल रे कोन अछि p cos थीटा अछि सो E1 is equal to k into 2p cos theta divided by r क्यू बुझी पाइला पिला माने ना बुझी पाइला निकी एठी से p थिला एक्सियल लाइन रे होतिला k into 2p by r क्यू एठी p cos theta अछि हम एक्सियल लाइन रे केते हि जीव k into 2p cos theta by r क्यू similarly point M
point M is on the equatorial line, is on the equatorial line of P sin theta. On the equatorial line of P sin theta. Point M is on the equatorial line of P sin theta. So electric field E2 केते हेजिवो इक्वेटोरियल लाइन रे K into सेठी थिला इक्वेटोरियल लाइन रो फार्मूला कोन थिला E इक्वेटोरियल थिला KP by RQ थिला KP by RQ. So it is KP. P बदले कोन अछि P sin theta divided by RQ. Okay. So E1 and E2. So E1 E2 with angle केते एटा गोटे E1 हला E1 एटा गोटे हला E2. So E2 with angle केते E1 E2 with 90 degree. So net electric field, so एटी बाहर करिबा net electric field at point M, net electric field at point M at any general point, any point, E any point mu lekhuchi E any point is equal to कोन हबो any point केते हे जिवो ना E1 रो स्क्वायर एटा 90 डिग्री अछि ना दुईटा वेक्टर 90 डिग्री रे थिले तार रिजल्टेंट केते हे जिवो ना E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर रो रूट ओवर. So that is equal to केते E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर रूट ओवर. E1 हला KP cos theta by RQ रो स्क्वायर KP cos theta by K into 2P, sorry, K into 2P cos theta by RQ. So it is plus K into P sin theta by RQ रो स्क्वायर रो रूट ओवर. ताले एटू कॉमन किए जीव देख KP by RQ common पड़ेगा. So this is equal to, so that implies E at any point देखो E at any point is equal to मु common नहीं परिबी KP by RQ रो स्क्वायर रूट ओवर. So K into P by RQ रहिबो. So square root of स्क्वायर रूट ओवर पड़ेगा. एटा रहिबो 2 cos square theta 2 cos theta रो स्क्वायर means 4 cos square theta plus एठी रहइबो केते sin theta sin square theta. बुझियला पिला माने. सो ई cos square theta plus गोटे sin square theta मु नै जिवि. So KP by RQ, so root over of 3 cos square theta plus cos square theta plus sin square theta पिला माने. ए cos square theta sin square theta केते हे जो पिला माने 1. सो केते हे जीव ताले E at any point, so मु एडी लिखुची E at any point is equal to KP by RQ into 3 cos square theta plus 1 root over 3 cos square theta plus 1 root over. So this is the electric field at any point on the due to the electric dipole at any point. बुझियला पिला माने एती बुझि पाइला तो कोन हला E at any point हला KP by RQ into 1 plus 3 cos square theta हला पिला माने. तो एबे हम तीनटा इलेक्ट्रिक फील्ड रो डेरिवेशन कले तो तमे एटा पॉज करके लिखि दियो पिला माने. अच्छा मु जानिबी रे ठीक अछि कि नाही मोर केमे जानिबी देखो एरा इरेज करूची ताहाले मु कोन बाहर कली देखो पिला माने मु बाहर कली जे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन. फाइनली कोन कंक्लूजन E axial है केते इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन है K into 2P by RQ. ठीक अछि.
ई इक्वेटोरियल केते हैला ई इक्वेटोरियल हैला मोर ई इक्वेटोरियल हैला k into p by rq e at any point कौन हैला पिला माने kp by rq into 3 cos square theta plus 1 ra root over. So 3 cos square theta plus 1 ra root over. So एबे देखो मु एटा ठीक अछि कि नाही कोन एक्सियल लाइन हैला कोडा एटा जेतले थीटा टा कोन हे जिवो थीटा टा कमी कमी 0 हे जिवो ताले देखो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 ताले एक्सियल लाइन पूरा हे जिवो ताले केते हे जिवो ई एक्सियल थीटा टा 0 ही गले cos 0 टा केते हे जिवो 1 सो 3 plus 1 4 root over kp into 2 by rq हे जिवो बुझी पाइला 3 cos square theta plus 1 cos 0 हैला 1 3 plus 1 हैला 4 जदि इक्वेटोरियल पाई थीटा इज इक्वल टू 90 इफ थीटा इज इक्वल टू 90 ताले cos 90 जीवो 0 ओके सो एटा टोटल टा 0 हे जीवो 0 plus 1 सो केते हे जीवो खाली kp by rq सो बुझी पाइला पिला माने ता माने मु जोडा डेरिवेशन करिछि एनी पॉइंट पाई ठीक अछि सो सेम एक्सियल जहाँ बाहर करथिली से बाहरुची जहाँ इक्वेटोरियल बाहर करथिली से बाहरुची ठीक अछि तो आज पे एते के पिला माने थैंक यू।